Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, today we are going to start the next process, which is translation. So let's start our topic on translation. Translation, or we can call it the DNA translation. In the previous video we studied about the genetic codes, and we know that how the different types of, or 64 types of genetic codes can code for 20 amino acids, and these amino acids are used to make the protein, और प्रोटीन सिंथेसिस में ही यूज होंगे ये अमाइनो एसिड, और इसी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है दैट डीएनए transfer its genetic information onto the mRNA, and this process is translation, transcription that we have already studied, that is transcription. And then this information which are transferred onto the mRNA, अब mRNA के पास information आ गई है DNA के पास से, अब इस mRNA पे information के अकॉर्डिंग प्रोटीन का सिंथेसिस होगा. जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन DNA ने दी है उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाएगा, एंड दिस प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसलेशन. तो आज हम इसी ट्रांसलेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. देखते हैं इस प्रोसेस में क्या होता है. प्रोटीन, वी नो दैट दीज प्रोटीन्स, these are the polymers of amino acids. Proteins, to make a protein, many amino acids, they join together and they make protein. So we can say that the polymerization of amino acid is known as protein. So for this synthesis of the protein, amino acids are required, and these amino acids, many amino acids when join and they get polymerized, then they form the protein. तो प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन बनने के लिए अमाइनो एसिड्स की जरूरत होती है, और यही mRNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस जो है ट्रांसलेशन प्रोसेस कहलाएगी. पहले हम देखते हैं कि इस ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर है, और व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस. सो लेट्स डिस्कस द requirement of translation. Let's see what things are required for this translation process. The first thing we can say that ribosomes. First thing that is required is the ribosomes. So ribosomes are required for the translation because ribosomes are known as protein factory. These are the site where the protein synthesis process happens. तो ये वही जगह है जहाँ पे एक्चुअल में ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रही है. तो ये साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की. इट्स द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. So this is very important requirement. बहुत important requirement है. Second, we can say that mRNA is required. mRNA work as a template which provide the genetic information or codes according which the amino acids will bind to make a protein. किस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड को बाइंड होना है, किस सीक्वेंस में वे जुड़ के किस तरीके का प्रोटीन बनाना है, इस चीज की इंफॉर्मेशन उन्हें कौन देगा? वो इंफॉर्मेशन मिलेगी mRNA से, क्योंकि mRNA इंफॉर्मेशन ली है DNA से. सो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द DNA, these mRNA provide the codes for the combining of amino acids. So it work as in a template. ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा. Template which provide information for the binding of amino acids. So this is about the mRNA. Now let's come on to the next thing, that is tRNA. tRNA और the transfer RNA. ट्रांसफर आरएनए की हमने जब तीनों तरीके की आरएनए की स्ट्रक्चर स्टडी की थी, then we know that tRNA has a clover leaf structure, और उसी क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर की वजह से tRNA अमाइनो एसिड्स को बाइंड कर सकता है अपने साथ. तो tRNA का काम क्या है? इट ट्रांसफर्स द अमाइनो एसिड्स एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये करेगा ट्रांसफर, इट ट्रांसफर्स द अमाइनो एसिड एट द साइट. जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होगा उस प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पे अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ेगी प्रोटीन बनाने के लिए, और उन अमाइनो एसिड को लेके कौन जाएगा? दैट वाज डन बाय द tRNA. tRNA उन्हें ट्रांसफर करेगा या उस साइट तक पहुंचाने का काम करेगा.
अब next requirement is amino acids. All these amino acids which are utilized for the protein synthesis, these amino acids are found into the cytoplasm. ये cytoplasm में present है और वहीं से इन्हें carry करके transfer RNA लेके जाएगा protein site तक, protein synthesis की site तक. So amino acids are the another requirement which are used to make a protein. Protein बनाने के लिए जरूरत है, तो this is also a very important thing. Now next thing is the enzyme. And enzyme is also required. अब ये सब जो प्रोसेस हो रही है इसके लिए किसी न किसी एंजाइम की जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी. So the enzyme which is utilized for this translation mechanism, for this translation process is amino acyl synthetase enzyme. Synthetase enzyme. So this is the name of the enzyme which is required for the translation process. So here we discuss the requirement or the things which are required for the translation. The first is the ribosomes, which is the site of protein synthesis. Second requirement is the mRNA or the messenger RNA. mRNA work as a template according to the information provided by on the mRNA is coded in the form of protein. और amino acids की binding के लिए जो information होगी वो मिलेगी mRNA से ही. Next requirement is the tRNA. tRNA is also called as transfer RNA, which carries the amino acids at the site of protein synthesis. Next, amino acids are required, and then enzyme, which is amino acyl synthetase enzyme. This is also required for the translation process. So this is the requirement of the translation. Now let's see the what are the mechanism or the steps of this translation process. तो अब हम बात कर रहे हैं steps of translation के. Of translation. ये जो पूरी प्रोसेस है इसे हम पर्टिकुलर स्टेप्स के अंदर स्टडी करते हैं ताकि हम आसानी से इस प्रोसेस को समझ सके. सो लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस. First step or first thing which happens during this process is activation of amino acids. Activation of amino acids. So this is the first step, that amino acids which are found into this cytoplasm, they should be activated. इनका activation होना बहुत जरूरी है. We will discuss this complete step also. So first step is activation of amino acid. Second step will be the transfer of these activated amino acids onto the tRNA. After activation, जब ये amino acid active हो जाते हैं, active होने के बाद ये amino acid tRNA पे transfer होंगे. So it's transfer. Second step is transfer of activated amino acids, on tRNA or transfer RNA. So this is the next step of this translation process. And the third step is the main process, which is the protein synthesis process. ये वो process है जहाँ पे actual अब protein synthesis start होगा. So that will be the protein synthesis process. And we will divide this protein synthesis step in further steps also, like initiation, elongation and then termination. इन्हें भी हम step by step manner में discuss करेंगे. So let's start with the first step of the translation, that is activation of amino acid. तो हम शुरू कर रहे हैं इसी step से. Discuss this first step of translation mechanism, which is activation of amino acids. The amino acids which are found into the cytoplasm, means all the 20 type of amino acids are present in the cytoplasm. And for the protein synthesis process, for the translation process, first these amino acids should be activated. इन्हें पहले activate करना पड़ता है, and इसी process को हम बोल रहे हैं activation of amino acids. For the activation of amino acids, the things which are required is ATP. सबसे important thing है, that is the ATP. ATP की जरूरत पड़ती है amino acids को active करने के लिए. And second requirement is the enzyme, and enzyme is amino acyl enzyme. So these are the two requirements which amino acyl synthetase enzyme. So these are the two requirements for the activation of amino acids in the presence of ATP and the enzyme. So let's write the equation. हम पूरी equation की form में देखते हैं. These are the amino acids. These amino acids in the presence of ATP and
in the presence of enzyme. This E means enzyme, that is amino acid synthetase enzyme. इसे हमने यहाँ पे E से शो किया है. In the presence of both these two things, these ATP get activated. ATP activated होंगे and they will form a complex which is known as activated amino acid AMP and enzyme complex. So this will be formed here. This is the activated amino acids. अब ये amino acid जो है वो activated amino acids हैं and this complex is known as activated amino acid AMP enzyme complex. So it's a complex structure in which amino acids are activated now by utilizing the energy. जैसे कि आपको पता है ATP, it has the 3 phosphate molecules and out of these 3 phosphate molecules, the 2 inorganic phosphates are also used up. So we will write here that these 2 inorganic phosphate molecules are used up and ATP will convert into the AMP. So by utilizing the energy and by the presence of the enzyme, finally we can say that these amino acids become activated amino acids. So ये हो गए हैं activated amino acids AMP enzyme complex. So it's a complex. हमने यहाँ पे complex word use किया है. ये complex बन गया है AMP activated amino acid और enzyme का. Now these activated amino acids are known as amino acid. इन्हें amino acid भी कह सकते हैं. कहीं कहीं आपको मिलेगा that they are also known as amino acid. But there is one exception. In the case of methionine, we know that this is the methionine. This is the amino acid which is coded by the AUG codon. जो AUG codon होता है, जो starting codon होता है, वो इस methionine amino acid के लिए कोड करता है. And the translation process also start with this start codon. जो पूरी ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी वो भी स्टार्ट किससे हो रही है? AUG कोडोन से ही हो रही है. इट मींस व्हेन द प्रोटीन सिंथेसिस विल बी स्टार्टेड, द फर्स्ट अमाइनो एसिड व्हिच विल बी फॉर्म्ड इज डेफिनेटली इट विल बी द मेथियोनिन. वो कौन सा होगा? मेथियोनिन होगा. So in the case of methionine, when it's become activated methionine के लिए जो हम word use करते हैं, it is known as FMAT. Formilated methionine. It's an activated methionine. Generally, we will make a complex that is activated AMP enzyme complex or amino acid. That is the term used for the activated amino acids. But if the amino acid is methionine, then we can use that is a FMAT. FMAT or formilated methionine word is used in the case of methionine. So this is about the activation of amino acids. These amino acids get activated by utilizing the energy in the form of ATP and in the presence of enzyme which is amino acid synthetase enzyme. So these amino acids get activated. Now let's come on to the second step, which is the transfer of these activated amino acids onto the tRNA. Second step is the transfer of activated amino acids. Transfer of activated amino acid on tRNA. अब जो amino acids activated हो गए हैं in the presence of amino acid synthetase enzyme, now they are to be transferred onto the tRNA. क्योंकि tRNA का ही काम है वो इन amino acids को उस साइट तक लेके जाएगा जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है. So for this we have to recall the structure of tRNA. tRNA की स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं. It has a clover leaf structure. इस तरीके की एक स्ट्रक्चर होती है tRNA की, in which we can say that it has 2 arms or 2 ends. This one will be the 3' end, this one will be the 5' end, and here this site is known as anticodon site. इस साइट को कहा जाता है anticodon site. So this is the anticodon site, and this site at the 3' end, this site is known as amino acid binding site. So it has the amino acid binding site at the 3' end of these tRNA. Now what happens? We know that this activated amino acids is present in the form of complex, that is activated amino acid, AMP, and the enzyme complex. Now they will bind with the tRNA. tRNA के साथ binding होगी, tRNA के साथ जब join होंगे, then what happened?
these activated amino acids will come and bind at this position of the tRNA. यहाँ पे इस पोजीशन पे आके ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड जो होगा यहाँ पे बाइंड हो जाएगा इस साइड पे, बिकॉज दिस साइड इज अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइड। और कौन से अमाइनो एसिड यहाँ पे बाइंड होंगे? जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड होंगे। एंड द बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड इज अकॉर्डिंग टू द एंटीकोडोन। जो एंटीकोडोन्स यहाँ पे हैं, द कोडोन्स आर प्रेजेंट ऑन टू द mRNA एंड अकॉर्डिंग टू दिस कोडोन, जो mRNA पे कोडोन प्रेजेंट है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटी कोडोन होंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे कोडोन होंगे जिन्हें हम एंटी कोडोन्स कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कोडोन विच आर प्रेजेंट ऑन टू द mRNA, the tRNA will bind the specific activated amino acid. ओके, यहाँ पे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ही बाइंड होगा। फॉर ईच टाइप ऑफ अमाइनो एसिड द डिफरेंट टाइप ऑफ tRNAs विल बी यूज्ड एंड इट इज अकॉर्डिंग टू देयर एंटीकोडोन साइट। ये एंटीकोडोन साइट पे ही डिपेंड करेगा कौन सा अमाइनो एसिड यहाँ पे आके बाइंड होगा। हर तरीके के अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग tRNA होंगे। This process, when this amino acid get binded with the tRNA, it's known as charging of the tRNA or amino acylation of the tRNA. So overall what we can say that what will happen here, now this activated amino acid will bind with the tRNA के साथ bind होगा, then this AMP will get separate, ये separate हो जाएगा, it will get separated from it, and this enzyme, amino acyl synthesis enzyme will also get separated. तो अभी क्या कर गया, this complex will become, that is known as activated amino acid and tRNA complex. So finally we can say that activated amino acid and tRNA complex will formed here. एक बार फिर से देखते हैं क्या हो रहा है इस स्टेप के अंदर। जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड थे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया था एएमपी और एंजाइम के साथ, इनमें से अब अमाइनो एसिड, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स यहां से हटके कहां आ रहे हैं, tRNA के 3 प्राइम एंड पे आके बाइंड हो जाएंगे जहां पे अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। और जैसे ये बाइंड होंगे, इस कॉम्प्लेक्स में एएमपी है, एंजाइम है, दे विल गेट सेपरेट, ये सेपरेट हो जाएंगे, इससे अलग हो जाएंगे एंड फाइनली द न्यू कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म। एक नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड एंड tRNA कॉम्प्लेक्स। सो दिस एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड एंड tRNA कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज charging of tRNA or amino acylation of the tRNA. So finally the activated amino acids are binded with the tRNA and now these are ready to reach at the site of protein synthesis. So अब यहाँ से ये जाएंगे protein synthesis की साइड पे। So let's come on to the third step of the translation, which is protein synthesis. The actual protein synthesis happens in this step. This step is also divided into this some another steps. इसे भी हम कुछ steps में ही divide करके समझने की कोशिश करेंगे। First step in this protein synthesis process is the initiation. Initiation means शुरुआत हो रही है प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस की। इस इनिशिएशन स्टेप के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस होंगे, बहुत सारी प्रोसेसेस होंगी। सो फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस ड्यूरिंग द इनिशिएशन, द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इज द attachment, or sorry, assembly of ribosomes. Assembly of ribosome. Now let's come on to this ribosomes. We know that ribosomes are the protein factory of this cell, or these are the major site of the protein synthesis. सारा जो protein synthesis का काम है वो ribosomes पे ही होना है। And we have studied two types of ribosomes, 70S ribosomes and 80S ribosomes. 70S ribosomes are found into the prokaryotic cells and in the mitochondria and plastid, whereas the 80S ribosomes are found into the eukaryotic cells. And both of these two types of ribosomes has two subunits. दोनों ही ribosomes में two subunits होती हैं. One is the largest subunit, 50S and 30S in the case of 70S ribosomes, 60S and 40S in the case of 80S ribosomes. So both these two type of ribosomes has subunits. इनकी subunits present होगी. So let's see. Suppose this is the smaller subunit. This is the smaller subunit of the ribosomes, and this will be the larger subunit.
ये लार्जेस्ट सब यूनिट है। वैसे स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए राइबोसोम्स को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। सो दीज आर द टू सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स। बोथ ऑफ दीज टू सब यूनिट्स दे रिमेन सेपरेट इनटू द साइटोप्लाज्म। जनरली जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा, राइबोसोम की जरूरत नहीं है, एट दैट टाइम दे रिमेन सेपरेट। दोनों सब यूनिट सेपरेट रहेंगी साइटोप्लाज्म के अंदर। बट एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस का टाइम होगा, these two subunits they get assembly होगी, they will come and join with each other. This is known as assembly of ribosome, and for this assembly the most important thing that is required is the magnesium ion. This assembly of ribosome is happen in the presence of the magnesium ion. So in the presence of magnesium ion, both of these two subunits of the ribosomes, they come together and they bind with each other, and this is known as assembly of ribosome. It happens only in the presence of magnesium ion. A fixed concentration of magnesium ions are required. That is 0.001 m. तो इसी कंसंट्रेशन पे मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में राइबोसोम्स की असेंबली होगी। अगर ये कंसंट्रेशन कम है तो बाइंडिंग नहीं होगी, अगर ज्यादा है, इफ दे हैव द मींस मोर कंसंट्रेशन ऑफ द मैग्नीशियम्स आर फाउंड, देन डायमर फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि ज्यादा राइबोसोम सबयूनिट जो है वो अटैच हो जाती है। तो फिक्स कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द असेंबली ऑफ राइबोसोम्स. So here we can say that two subunits of ribosomes, that smaller and larger subunits, they bind together, they assemble together in the presence of magnesium ion. Here in the smaller subunit has a site or a tunnel in which the mRNA can be bind. This smaller subunit has a site in which the mRNA can be bind. For the protein synthesis or for the translation process, this mRNA which has the genetic information transferred by the DNA से ट्रांसफर कर होके जो इंफॉर्मेशन mRNA के पास आई है, वो mRNA टेम्पलेट की तरह काम करेगा। उसी इंफॉर्मेशन को रीड करते हुए एक्चुअल ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा। सो उस mRNA को जिसके अकॉर्डिंग, जिस mRNA पे प्रोटीन सिंथेसिस करना है, दैट mRNA विल कम एंड इट जॉइंस विद द स्मॉलर सबयूनिट ऑफ द राइबोसोम्स। स्मॉलर सबयूनिट राइबोसोम के साथ बाइंड होगा। At the larger subunit also some important things are there. In the larger subunit it has three important sites. In the larger subunit it has three sites for different purposes. What are the name of these sites? Let's see. The three sites are, this is the E site, P site and the A site. These are the three important sites which are present onto the larger subunit of the ribosomes. E site, पहले चलो A से स्टार्ट करते हैं। The A site is known as amino acyl site. A site is amino acyl site. This is the site where the tRNA will bring the activated amino acids. हमने पिछले स्टेप में देखा था अमाइनो एसिड एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट होने के बाद वो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड टीआरएनए के साथ बाइंड हो जाएंगे। तो उस एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड वाल को लेके टीआरएनए आके सबसे पहले बाइंड होगा एट दिस साइट ए। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए साइट और अमाइनो एसाइल साइट। बट दिस इज एन यहाँ पे एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ द फर्स्ट टीआरएनए, दैट इज द मिथाइलेटेड जो एफ मेथ यानी कि मिथियोनिन अमाइनो एसिड को कैरी करके लाएगा। फर्स्ट जो टीआरएनए होगा दैट विल कम ऑन टू द डायरेक्टली दैट विल कम ऑन टू द पी साइड, वो पी साइड पे आता है। अदरवाइज all the tRNAs which are carrying the amino acids or activated amino acids, they will come and they will join at this site which is known as amino acyl site, or in short we can call it A site। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड साइट की, दैट इज P साइट। P साइट इज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन साइट। ये वो साइट है जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन साइट। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। वी नो दैट अमाइनो एसिड्स दे जॉइन टुगेदर विद वन अदर, एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे एंड दे बाइंड टुगेदर बाय अ बॉन्ड व्हिच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमाइनो एसिड्स के बीच में, तभी प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। सो दिस इज द साइट वेयर द
peptide bond formation happens. So this site is known as peptide bond formation site or peptidyl site. It is also known as peptidyl site. This is about this second site, this P site. ये बात की हमने P site के बारे में. Now let's come on to the third site, that is E site. E site, or it is the exit site. Exit site. E site or exit site is the site by which the tRNA, when it release and the amino acid which are present on this tRNA, वो tRNA जब peptide bond बना लेगा, tRNA फ्री हो जाएगा. इसका काम क्या है tRNA का? tRNA का फंक्शन है सिर्फ यहाँ पे अमाइनो एसिड्स को पहुंचा देगा. पहुंचाने के बाद अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स फॉर्मेशन में काम आ जाएंगे. पहले आए हुए अमाइनो एसिड के साथ वो पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं. जब उसने अपने अमाइनो एसिड को ही ट्रांसफर कर दिया है तो अब tRNA फ्री हो गया. इट हैज नो रोल हियर. दैट्स व्हाई दिस फ्री tRNA विल रिलीज और मींस इट गेट फ्री फ्रॉम हियर. यहां से एग्जिट कर जाएगा. And the site from where the free tRNA will means remove from this site, from this complex, is known as exit site. So these are the three sites which are present onto the ribosome. So let's see what we have studied here. We have studied the assembly of ribosomes, two subunits, smaller subunit, larger subunit. Both of these two subunits of ribosomes join together or assemble together in the presence of magnesium ion, and for this they have required a particular concentration of magnesium ion, and when these two subunits join together, it is known as assembly of ribosomes. These ribosome subunits has particular टनल और साइट्स. यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट के पास एक साइट होती है जहाँ पे mRNA आके बाइंड होता है, whereas the larger subunit has a three important sites, that is A site, P site and E site. A site means amino acyl site at which the tRNA brings the activated amino acids. P site is the peptide bond formation site or peptidyl site. And the third site is the E or exit site, जहाँ से tRNA release हो जाएगा after transferring its activated amino acid. So this is about this assembly or the all the important structure of the ribosomes. Now let's come on to the next step. Next step of this step, that protein synthesis process. First step here we studied, that is the assembly of the ribosomes, where the both of these two subunits join together. After this assembly, the second step is the attachment of mRNA. Second step we can write here, that is the attachment of mRNA. Attachment of mRNA, that we have already discussed, that this mRNA will bind or it get attached with the smaller subunit of the ribosomes. So this mRNA which need to be translated, जिस mRNA को translate करना है, this mRNA will come and it will join at the smaller subunit of this ribosomes, and this is known as attachment of mRNA. So after the attachment of this complete assembly of the ribosomes, the mRNA get attached, and after that the protein synthesis process or the polypeptide formation process will start. So now we will discuss this process of the peptide formation.